Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Students, in previous lecture we have studied that what is civilization and the Indus Valley civilization. Okay, now in this lecture we will study cities of the Indus Valley civilization. मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन कौन सी मुख्य मेन सिटीज़ थी. Number 1. Harappa. This archaeological site at Punjab in Pakistan consists of the ruins of a fortified site. Means this city located at Punjab, but now at present it is in Pakistan. Okay, and now the situation of the city is totally ruined, means destroyed, but at that time it was fortified, means it was protected through wall like fort. Okay, so now this Harappa city is excavated, means digged out, मतलब खुदाई के द्वारा मिली गई है. तो इन दिस वे Harappa was the first site of the Indus Valley civilization. Now the next city is Mohenjo-daro. This city built around 2500 BCE. Mohenjo-daro literally means mound of a dead. This archaeological site is situated in the Sindh province of Pakistan and has been declared a World Heritage Site by UNESCO in 1980. So, the second famous city is Mohenjo-daro. It was found before 2500 years ago. It means a heap of dead bodies. Mound means a heap, ढेरा, जिसको हम ढेर भी कहते हैं. तो दिस इज ऑल्सो ए आर्कोलॉजिकल साइट, मीन्स द साइट विच वॉज डिग्ड, खुदाई से जो हमें मिलता है. ओके, एंड दिस इज लोकेटेड, दिस सिटी इज लोकेटेड इन सिंध रीजन ऑफ पाकिस्तान, एंड the UNESCO declared World Heritage Site, means it is considered as a World Heritage Site by UNESCO. Now what is the full form of UNESCO? UNESCO means United Nations Educational, Scientific, Culture Organization. Okay, you will learn more about UNESCO in next class. Okay. मोहनजोदड़ो जो दूसरी बड़ी सिटी यानी कि शहर माना गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जो करीब करीब 2500 साल पहले बनी गई थी. इसका मीनिंग, जिसको हम कहते हैं मोहनजोदड़ो का, अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो कहा जाता है कि मृत शरीर का ढेर. ओके, तो ये शहर भी आर्कोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा ही, खुदाई के द्वारा ही हमें सिंध प्रोविंस में से, सिंध क्षेत्र में से मिला गया है, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज में, दुनिया की जो धरोहर होती है, जो हमारी पुरानी चीज़ें होती है, उसको हम संभाल के रखते हैं, उसको कहते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट. तो उन्होंने 1980 में उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट
माना गया है यूनेस्को के द्वारा। तो यूनेस्को का अर्थ है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, द नेक्स्ट सिटी इज कालीबंगन। दिस टाउन is the Indus Valley civilization has developed at the confluence of the river Dishadvati and the Saraswati river in Rajasthan. The unique fire altars found in Kalibanga are one of its most significant feature. Okay, so this town situated in Rajasthan where the two rivers meet, that is called confluence, the river Dishadvati and the Saraswati. Okay, at that place this site is located, and the special thing of this site is altars fire, means here the person who sacrifice, that place is known as altars. So here altar fire is found, and it is a most significant, most important feature of this place. तो कालीबंगा जो टाउन है वो राजस्थान में पाया गया है, और दिशादवती और सरस्वती नदी जहाँ मिलती है उस जगह पर ये कालीबंगा साइट पाई गई है। इसकी एक खास चीज़ है, वो है अल्टर जोत। नाउ द फोर्थ सिटी इज लोथल। लोथल वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात। वैल्यूएबल जेम्स, beads and valuable ornaments were traded with West Asia and Africa via the Arabian Sea from Lothal. So we can say that Lothal is a port of Gujarat for trading. So that's why it is a most prominent, means most important center for Indus Valley civilization, and from that port valuable gems, means valuable stones, beads and ornaments were traded, means they are doing business from West Asia, or we can say our India western part, and Africa. The route is Arabian Sea. ओके, सो जो लोथल साइट है, लोथल सिटी है, उस समय बहुत ही प्रॉस्परस और इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर माना जाता था, जिसके द्वारा कीमती जेम्स यानी कि रत्न, बेड्स मोती, ऑर्नामेंट्स आभूषण का व्यापार होता था। वेस्ट एशिया यानी कि हमारे भारत का जो वेस्टर्न हिस्सा है, और दूसरी जो वेस्ट की तरफ कंट्री है एशिया की, से अफ्रीका की तरफ, और ये वाया अरेबियन सी जो वेस्ट में ही लोकेट है, अरेबियन सी के थ्रू अफ्रीका तक व्यापार होता था इस सारी चीज़ों का। नाउ next paragraph is sources. The main sources for studying the history of the Indus Valley civilization are the terracotta seal, which were mostly square in shape. These seals have animals and human figure engraved on them. The script is yet to be deciphered and will unveil much more than what we know today. Now, what do we mean by sources? Sources means things from we come to know.
we can come to know something from some things. That is called sources. So to know Indus Valley civilization, we got something, and among that things, terracotta seal is the main source, and that seals were made square in shape, and animal and human figures were carved on it. Some script also we got, but that script is not fully understood by the people. It is not yet to be understood. In this way, the seals are the main sources. अब हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानने के लिए कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम जान सकते हैं, तो उनमें से सबसे मुख्य सील यानी कि मोहरें मानी गई है, जो अधिकतर स्क्वायर शेप में है, चौरस शेप में है, और उसके ऊपर एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की आकृतियाँ बनी हुई है। कुछ हमें लिपि भी मिली है, राइटिंग वर्क भी मिला है, मगर वे हमें पूरा मतलब नहीं समझा पा रही है, या हम उसे अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। Now next paragraph, the skilled engineer of the Indus Valley. Engineers of these ancient civilizations were very skilled, and their towns were well planned. There is clear evidence of the use of burnt bricks in making drains and roads. These bricks were baked in oven outside the limit of the town. Now, what do you mean by skilled engineer? Means they are trained, they are perfect engineer, and their village planning is also very good. While making the village town, they use burnt bricks specially for drain. Drain means we can say canal, from where we can pass used water, okay, and road. So in this way, at that time also, while building the town, they use burnt bricks as well as. Now the next paragraph is the planned town. The Harappa town were well planned. They were divided into two parts. The upper part, described as the citadel by archaeologists, was built on a raised platform. All important buildings like the Great Bath, the granaries, and the town hall are found here. The second part was the lower town, which included residential building or houses, all laid out in a grade. Means from this paragraph we come to know that how the town is planned. So in short we can say that town is planned into two parts. Upper part consists great bath, granaries means grain store, and the town hall where all people gathered. Okay, now the second part is known as lower part, and in that part residential building means where the people lives are located, and all these houses laid out in a grid. Now what do you mean by grid? Parallel lines which cross each other, means they all houses are in a
row and they cut each other at 90 angle. Means we can say that the houses is also well planned. तो हम इसमें देखते हैं कि जो हड़प्पा टाउन है वो दो भागों में बांटा गया था। पहला अपर पार्ट और दूसरा लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट में जो है मेन चीज़ें होती थी, जैसे कि वहाँ से एक मिला ग्रेट बाथ, तो वो अपर पार्ट में हुआ करता था। सेकंड ग्रेनरीज, यानी कि जहाँ पे अनाज को हम स्टोर करते हैं, और टाउन हॉल आदि। तो टाउन हॉल भी एक बहुत बड़ी जगह होती है जहाँ सब लोग इकट्ठे होते हैं। जो लोअर पार्ट होता था, लोअर टाउन होता था, उसमें गांव के लोगों के घर होते थे, और वे घर भी जो है ग्रिड में बने होते थे। ग्रिड यानी कि सीधी सीधी लाइन या सीधी सड़क जो है खड़ी भी होती थी और हम कह सकते हैं सीधी भी होती थी। तो सीधी लाइन और एक फ्लैट लाइन जब क्रॉस करती है एक दूसरे को तो वो ग्रिड बन जाता है। तो इस तरह से मकान बनाए हुए होते थे। नाउ द स्टोर हाउसेस। Elaborate storehouses have been found in Mohenjo-daro, Harappa and Lothal. All the surplus grain were stored in these storehouses, which were situated near the river bank. Harappa had more than 60 of them. Now, this town have storehouses also, where the things, especially grains, were stored. So this storehouse is found in Mohenjo-daro also, Harappa as well as Lothal. Okay, and especially Harappa town had more than 60 storehouses. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में से हमें स्टोर हाउस भी मिले। मोहनजोदड़ो में भी थे, हड़प्पा शहर में भी थे और लोथल में भी, जिसमें सरप्लस ग्रेन यानी कि जो ज़्यादा अनाज होता है, जो बचा हुआ नहीं कह सकते मगर एक्स्ट्रा ग्रेन्स जो होते थे उनको वहाँ पे स्टोर कर दिया जाता था। और हड़प्पा शहर में से ही हमें 60 के करीब या 60 से भी ज़्यादा स्टोर हाउस देखने को मिलते हैं। द नेक्स्ट इज ग्रेट बाथ। अनदर प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन फाउंड एट मोहनजोदड़ो was a very special tank, which archaeologists called a great bath. It was like a large swimming pool. This was a magnificent and outstanding structure. It was watertight and layered with bricks and mortar. There were changing rooms along the sides. The great bath may have been used for rituals bathing purpose. So in this paragraph we come to know about Mohenjo-daro's special tank. This tank is a wonderful tank and it is just like a large swimming pool. Its structure is outstanding. Step by step the people can go into this great tank, and these steps were made up of bricks. Along with that tank, one changing room is also there, so people can change there. And now specially this tank is used on the
festival when people have to do some rituals. At that time people have a bath and afterward they celebrate the function or festival. ओके तो यहाँ पर ग्रेट बाथ के बारे में हमने देखा कि ग्रेट बाथ है वो एक अलग ही अद्भुत तरह का स्विमिंग पूल के जैसा एक बहुत बड़ी टंकी है जो स्टेप यानी कि सीढ़ियों के द्वारा हम उसके अंदर जा सकते हैं। और वो सीढ़ियाँ जो है ब्रिक्स यानी कि ईंट से बनी हुई है। उसी के साथ एक चेंजिंग रूम भी बना हुआ है। स्नान करने के बाद हम कपड़े बदल सकते हैं। और ये ग्रेट बाथ खास करके कोई धार्मिक फंक्शन हो, धार्मिक कोई त्यौहार हो, तब इसमें पहले लोग नहाते थे और फिर वो धार्मिक जो है विधि करते थे। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा ग्रेट बाथ भी हमें देखा।